जरा लाइट को इमेजिन करो, ये हमारे प्लेनेट को नहलाती है, सन से चलकर इतने बेड स्पेस को पार करके आती है। इसी से हम सब कुछ देख पाते हैं, रेनबो के कलर्स, किसी अपने का चेहरा। लेकिन आखिर ये लाइट है क्या रियली? सदियों तक हम सोचते थे कि ये एक स्ट्रीम है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्ट्रीम, जैसे एनर्जी की नन्ही बुलेट्स। ये था जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स का दौर। इसने शैडोज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया और लेंसेज कैसे काम करते हैं, लाइट को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करना या यूज डोर तक फैलाना। बट कुछ मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड रह गए। लाइट के कुछ ऐसे बिहेवियर्स, ये बिहेवियर्स किसी और चीज की तरफ इशारा करते थे, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा अद्भुत, लाइट की एक अलग ही नेचर। फिर आया एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, क्या हो अगर लाइट सिर्फ पार्टिकल्स ना हो? क्या हो अगर लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करे, जैसे तालाब में रिपल्स फैलती हैं या साउंड हवा में ट्रैवल करता है? इस आइडिया ने एक नई फील्ड खोल दी। हम इसे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ये ह्यूमन लाइट के सीक्रेट समझने में हेल्प करता है, उसके और भी सबटल इंट्रिकेट डांसेस को, लाइट के दिल तक का सफर। वेव ऑप्टिक्स इन्हीं वेव लाइक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करता है। ये लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में दिखाता है, जो वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है, स्पेस में मूव करती है। ये पर्सपेक्टिव नए फिनोमेना अनलॉक करता है, ऐसी चीजें जो सिर्फ पार्टिकल्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, जैसे सोप बबल में सुंदर कलर्स या लाइट का कॉर्नर्स की अराउंड बेंड होना। आइए हमारे साथ इस जर्नी पर वेव ऑप्टिक्स के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने और लाइट को एक नए तरीके से देखने। मिलिए क्रिस्टियान हुइगेंस से, एक डच साइंटिस्ट जो 17th सेंचुरी में रहते थे। उन्होंने लाइट को नई नजरों से देखा और एक फैसिनेटिंग प्रिंसिपल प्रपोज किया, एक तरीका यह समझने का कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, कैसे एक सोर्स से फैलती है। इमेजिन करो कि तुमने पानी में एक कंकड़ गिराया, तुम देखते हो कि रिपल्स बाहर की तरफ फैल रही हैं। रिपल पर हर पॉइंट छोटे छोटे वेवलेट्स का एक नया सोर्स बन जाता है। हुइगेंस ने कहा कि लाइट भी ऐसे ही बिहेव करती है। लाइट की वेव फ्रंट पर हर पॉइंट, सोचो ये लाइट की एक लाइन है, एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये छोटे वेवलेट्स फैलते हैं, दे स्प्रेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। नया वेव फ्रंट, थोड़ी देर बाद वो सरफेस होता है जो इन सभी वेवलेट्स को टच करता है। यही है हुइगेंस प्रिंसिपल इन एसेंस। ये प्रिंसिपल इनक्रेडिबली पावरफुल है। ये लाइट को विजुअलाइज करने का एक टूल है, वो कैसे प्रोपेगेट करती है, कैसे मूव करती है। ये नहीं बताता कि लाइट से बनी है, बट इट डिस्क्राइब्स इट ट्रैवल्स। जैसे लाइट की जर्नी के लिए एक मैप बनाना, ये ह्यूमन लाइट का पाथ प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, इवन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। ये लाइट की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक बड़ा कदम था। इस आइडिया को यूज करके हम बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों लाइट स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती हुई दिखती है, इन अ यूनिफॉर्म मीडियम एट लीस्ट। वेवलेट्स एक स्पेसिफिक तरीके से कंबाइन होते हैं, they reinforce each other straight ahead and cancel out to the sides. So overall wave आगे बढ़ती है, as if it were a straight ray. But this principle also unlocks more. It unlocks reflection and refraction. चलो रिफ्लेक्शन को कंसिडर करते हैं। तुम इसे अच्छे से जानते हो, तुम अपना चेहरा मिरर में देखते हो, लाइट एक शाइनी सरफेस से बाउंस करती है। जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स इसके लिए सिंपल रूल्स यूज करता है। The angle of incidence equals reflection. But does light behave this way? Huygens principle एक आंसर देता है, ये वेव नेचर को काम करते हुए दिखाता है। Let's see how these wavelets explain it. ये काफी एलिगेंट पिक्चर है। इमेजिन एक वेव फ्रंट एक मिरर की तरफ आ रहा है, एक फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। जैसे ही वेव फ्रंट का हर पॉइंट हिट करता है, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये वेवलेट्स मिरर से बाहर की तरफ फैलते हैं, बैक इनटू द ओरिजिनल मीडियम। Think of them as tiny echoes, bouncing off the boundary. Wave capella part pele hit karta high, it starts sending out its wavelets. Jaise zyada wavefront pahunchta high, more points on the mirror create wavelets. Yeah, wavelets expand at the same speed, the speed of light in that medium. At certain time k bod humnaya reflected wavefront kodekta hain. It's the surface that touches these wavelets, a common tangent to them all. Yanaya wavefront mirror ke surface se door jata hai. And here's the beautiful part. Jabtum isi carefully draw karta ho. Using geometry and the principle, you find something remarkable. Incoming wavefront K angle, outgoing wavefront Ke angle se match karta hai. The law of reflection emerges naturally from the idea of light as a wave. Huygens Ke ripples, light Ke bounce. Its echo in space ki ek clear picture banate hain. अब चलो लाइट का एक और ट्रिक एक्सप्लोर करते हैं, the phenomenon called refraction. ये तब होता है जब लाइट बेंड होती है as it passes from one medium into another, different medium, जैसे एयर से वाटर में,
पानी के ग्लास में रखा स्ट्रॉ तेरा दिखता है. This is refraction in action. Geometric optics Snell's law को describe करता है, but Huygens gives us the why. Imagine हमारे wavefront को फिर से. Is bar, it approaches a boundary between two different transparent materials, say, air and glass, light alag speeds, par travel cardi high, air mine it's faster, glass mine it's a bit slower, yes speed change crucial high, it's the key to understanding refraction. Using Huygens' elegant principle, as the wavefront enters the glass, the part of the wave in glass slows down. Jo hissa abhi bhi air main high keeps its speed. The first point to enter the glass generates its wavelet, but slower. It doesn't travel as far in the same time as wavelets still in the air. This causes the entire wavefront to pivot, to change its direction, like a marching band turning a corner. The new wavefront in the second medium is formed by these slower wavelets. Uska direction abalag high. It is bent towards the normal, if light enters a denser medium, or away, if it enters a rarer one. Huygens' construction beautifully derives the mathematical law of refraction, Snell's law, a cornerstone of optics, revealed by the behavior of waves. Section 5. Jab light waves takrati hain, the dance of interference. Light waves mil sakti hain. They can interact. Is interaction ko interference kehte hain. It's a hallmark of wave behavior. सोचो दो कंकड़ तालाब में गिराए गए. उनकी ripples फैलती हैं और एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. कुछ जगहों पर ripples add up making a bigger wave. In other places they cancel out, leaving the water almost still. Light waves can do exactly this. Yeh phenomenon truly amazing hai. It shows light isn't just energy. It has phase and amplitude. जब दो light waves एक point पर मिलती हैं, their effects combine. अगर एक wave का crest दूसरी wave के crest से मिलता है, they reinforce. This is called constructive interference. The light becomes brighter there. Their energies add up to shine. But what if a crest meets a trough? The peak of one wave meets the valley of another. They work against each other. They can cancel each other out. This is destructive interference. Agar waves are perfectly matched. The light can disappear completely. Darkness from light. It's astonishing. A clear sign of wave nature. For interference to be clearly seen, the light sources must be coherent. Iska matlab hai, they have a constant phase difference in the same frequency or wavelength, like two singers perfectly in tune and keeping the same rhythm. Sunlight is usually not coherent enough for us to easily see interference, but lasers are excellent for this. They produce very coherent light. Section 6. Young's bold vision two slits unveil light's true nature. 19th century के शुरू में थॉमस यंग नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक ट्रूली हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट किया. इसने लाइट की वेव नेचर के लिए स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिया. It's now famously known as Young's double slit experiment. इसने एक लंबी चली आ रही डिबेट को सेटल किया, the debate between particle and wave theories. उनका setup beautifully simple था, yet its results were profound, changing how we see light forever. Young ne X-screenly Gispar do tiny slits the very narrow and very close together. He shone light onto this screen. Agar light surf particles hoti, we would expect two bright lines on another screen placed behind, one line corresponding to each slit like tiny bullets passing through. But that's not what Young observed. He saw something far more intricate. Instead he saw a pattern, a series of bright and dark bands. These are called interference fringes. Bright bands Jahan light was strong, dark bands Jahan light was weak or even completely absent. Yet pattern could only be explained if light behaved as a wave. The light waves passed through both slits and then interfered with each other. The bright bands appeared where waves met crest to crest, in constructive interference. The dark bands formed where waves met crest to trough, in destructive interference. Yeh experiment ek nirnayak mode tha. Gap 2s. Isne dikhaya ki light diffracts through slits, and then interferes to create a pattern. It strongly supported Huygens' ideas and the wave theory of light, a triumph of scientific inquiry. Section 7. Light's subtle spread, understanding the phenomenon of diffraction. Kya tumne kabhi light ko bend hote hue notice kiya hai? Not through a lens, but around an edge. Agar tum kisi sharp shadow ko dhyan se dekho, its edges are not perfectly sharp. There's a slight fuzziness. Light seems to creep into the shadow region. Light K obstacles Ke around, yet bending yet spreading through small openings is called diffraction. It's another distinct wave property. Diffraction tab hoda high when a wavefront encounters an obstacle or an aperture, the size of which is comparable to the wavelength of the light itself. According to Huygens' principle, again,
Each point on the part of the wavefront that passes through the opening acts as a source of secondary wavelets. These wavelets spread out into the region of the geometrical shadow. Consider light passing through a single slit, a narrow opening in a barrier. Agar slit wide high, much wider than the light's wavelength. Diffraction effects are small. We mostly see a bright band, the shape of the slit. But as the slit gets narrower, comparable to the wavelength, the light spreads out significantly. The pattern formed on a screen behind a single slit is revealing. It's not just one bright band, it's a central bright band, wider, and then a series of dimmer bands on either side, with dark lines between. The pattern is due to interference of wavelets from different parts of the same single slit, another beautiful display of light's wave nature. Section 8. Beyond single slits. Multiple paths and polarizations proof. Diffraction isn't limited to single slits. What if we have many slits? A diffraction grating is such a device. It has thousands of fine slits ruled very close to each other. Jab light passes through a grating. It produces very sharp interference patterns. The bright lines are more distinct and more widely separated than in a double-slit setup. Diffraction gratings are very useful. They can separate light into colors like a prism, but by diffraction. Each wavelength of light diffracts at a slightly different angle. So white light passing through is split into its full spectrum. Astronomers use gratings to study the light from distant stars, revealing their composition and motion. Now let's talk about polarization. This is a unique property of light. It tells us something fundamental about the nature of light waves. It proves light is a transverse wave. What does transverse mean? It means the vibrations of the wave are perpendicular to its direction, like shaking a rope up and down, while the wave travels horizontally. Sunlight or light from a bulb is usually unpolarized. The vibrations occur in all directions perpendicular to the ray of light. A polarizing filter acts like a picket fence. It only allows vibrations in one plane to pass through. Light becomes polarized. If you use two polarizers and align their axes perpendicular, they can block almost all light. This wouldn't happen if light were longitudinal. Section 9. The Wave Triumphant Key Insights and Light's Enduring Mystery. Interference Patterns Ki-Specific Mathematics Hadi High. For Young's double-slit experiment, for instance, the path difference between waves from the two slits to a point determines if interference is constructive or destructive. For constructive interference, or bright fringe, path difference equals n lambda, where n is an integer, 0, 1, 2, and lambda is the wavelength. Iska matlab Hayek wave na poor number of wavelengths ziyada travel kia. For destructive interference, or dark fringe, path difference equals n plus 1/2 lambda. The waves arrive out of step by half a wavelength or more. The fringe width, beta, the distance between two consecutive bright fringes, is given by beta equals lambda d over d Yahan. D is the distance to the screen and d is the distance between slits. These formulas allow precise predictions. So we've journeyed through wave optics. From Huygens ripples explaining reflection and the bending light of refraction to the dance of interference. Young's slits revealing light's true colors, diffraction's subtle spreading power, and polarization, the transverse proof. Light, it seems, is a wave, an electromagnetic wave to be precise, cosmos ka ek ajuba. Ya wave nature bahat kuch explain kartahai the colors in oil slicks, the iridescence of butterfly wings, the operation of advanced technologies like holography and fiber optics. But the story of light is not over. Sometimes it also behaves like a particle, a photon. This is wave-particle duality, one of quantum mechanics' deep truths. Light remains a source of wonder. Its mysteries continue to inspire us.